Lord. Om Sri Chinmay Sadgurave Namah. We have covered a beautiful sloka. What it was there, that if there is an absence of the succeeding stages, then the preceding ones are futile. If you have objective knowledge but no vairagya, that knowledge is of no use. If you are practicing self-withdrawal, but if does not lead to subjective knowledge of the higher, the self-withdrawal is only escapism. Our acharyas are really showing us the picture, and they are really very strict and harsh regarding this. You know, dispassion is not everything. Dispassion is the tool. I don't do anything else. I do vrata, upavas, everything else minutely. Not only Ekadashi, but other vratas also I do. But it has become my passion. And I tell people, today is Ekadashi, I can't eat anything else. Today is Ekadashi, I can't do anything else. So means I need recognition from people. साधन जीवन जितना गुप्त होगा सुप्त होगा उतना ही पोक्त होगा. It is not the life of exhibition. It is the life of realization. I am having a lot of knowledge regarding language and other things. But unless and until I am having dispassion of not of things, dispassion of my current behavior, which troubled me and troubled others. That dispassion is required. Dispassion of my current behavior, that I know everything, a lot of knowledge I'm having. But it doesn't mean that the knowledge of the whole world I have acquired. I can't insult others. I can't criticize others. I have to have vairagya of that behavior. It will never be creative. If you don't follow these things, it will never be creative. Each succeeding stage can be fruitful only if you have cultivated the noble qualities of the earlier. When an individual has, through withdrawal from sense pleasures, cultivated the true knowledge as it is expounded in the scriptures, then as a result of the knowledge, slowly and steadily he grows in his healthy attitude of detachment from the fields of sense gratifications.
When the seekers has, as a result of intelligent self-withdrawal, come to experience peace and happiness, flooding his bosom, he becomes the true savant at the temple gates of reality. Such a prepared personality alone can get admission into the transcendental state of God consciousness. It is only as a result of all these developments in oneself that one comes to a point of complete renunciation from all worldly activities. Because of a quarrel with his wife or due to the ingratitude of his children or because of failure in the market, if a foolish young man rejects the world and runs to the Ganga banks and colors his clothes, he does not become fit for the highest experience. संन्यास एक वृत्ति है, एक मेंटल स्टेट है. इसके साथ कपड़े की कोई संबंध नहीं. शर्ट पैंट सलवार कुर्ता में भी कोई सन्यासी बन सकता है. Do I love everyone else irrespectively? Have I stopped criticizing others? Have I stopped seeing faults in others? Have I started loving each and everyone else? That I will not feed someone else because he has not worked. I will not feed something else, someone else, they did not do like that. They did not praise me, so I will not feed. No, we have some, uh, you know, expression of love. Feeding people is one of them. Giving anything else and not criticizing. Accepting the life as it is. We always think ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है. ये भगवान की इच्छा है, वो ऐसा है. Who am I? ये सब विचार करने के लिए कि ये ऐसा है कि वो ऐसा है. मैं ऐसा क्यों हूं? ये तो पहले सवाल उठे. That why I am like this. Escapists from life cannot claim an entrance to dharma. Dharma, in its highest realms, is reserved only for evolved persons who have cultivated through sustained self-effort the necessary perfection. I want to tell these things again. Dharma in its highest realms is reserved only for evolved persons who have cultivated through sustained self-effort the necessary perfection. Evolution is not an accident. अचानक एक दिन सब हो जाएगा, मेरा परिवर्तन हो जाएगा. एक दिन ऐसे नहीं.
It's a day to day, each and every event wise practice, person wise practice. जिनसे प्रेम नहीं हुआ, जिनका सिर्फ मैं फॉल्ट ही देखा, गुनाह देखा, दोष देखा, दूसरे को उन लोगों के बारे में निंदा किया, I have to pay attention in those things. That how I can, जैसे मैंने एक के ऊपर निंदा, घृणा, criticism पैदा किया था, in the same way how I can produce love on the same object, same person, same situation. It's a challenge, I know. Sadhana means challenge. चैलेंज के सिवा कुछ हो सकता है क्या जीवन में? It's not an allopathic pill that reveals something else and then and there something new will be happening. It's a day-to-day practice, day-to-day practice. Evolution is not an accident. It is a logical development and has its stages. Every evolute will have to go through all the preceding stages before he can climb to the final stage of evolution. Thus, only an individual who has gone through all the disciplines indicated in the previous verse will really come to live a life of complete detachment from the world outside. He or she alone will experience a content or contentment that is unique and a bliss that is incomparable. When will it come? How will it come? Bhagavan Shankaracharya ji answers, this state of complete bliss and satisfaction comes naturally. We are striving for happiness, but happiness, bliss, Bhagavan darshan, मोक्ष, मुक्ति, ये सब बाई प्रोडक्ट है. It's a result of something else. And if that something else are practiced in a systematic manner, as Guru says, Shastra says, then the result is happiness, bliss, mukti, moksha, everything. Means we can achieve our aim or target. Comes. So, the state of complete bliss and satisfaction comes naturally as a result of the previous discipline. This is the final reward to the spiritual seeker. Drishta dukkheshvanudvega vidyaya prastutam phalam yat kritam bhranti belaya nana karma jugupsitam paschannaro vivekena tat katham kartumarhati. 422. Drishta dukkheshvanudvik
दृष्ट दुःखेष्वनुद्वेग विद्यया प्रस्तुतं फलम् यत्कृतं भ्रान्तिवेलया नाना कर्मजुगुप्सितम् पश्चान्नरो विवेकेन तत् कथं कर्तुमर्हति दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगः। कोई भी जो दुख दिखाई दे रहा है उस दुख में अनुद्वेग, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन। क्लियर? सो वी आर, क्यों हमारा नहीं होता है साधन जीवन? हम लोग साधन जीवन का नाव तो चला रहा है, शास्त्र रूपी गंगा में गुरु रूपी नाव है, या शास्त्र रूपी नाव में गुरु रूपी हाल है, और बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत। यू हैव नो आइडिया स्वामी जी। सुबह उठकर, नहाकर, धोकर, परफॉर्मिंग ऑल द ड्यूटीज minutely, perfectly. I do japa, I do puja for 1 hour, 2 hours, 3 hours. I do studies. I listen to your, you know, holy discourses. And if your class is not there, I listen to previous classes. क्यों नहीं हो रहा है उसके बाद? Because I have made dear my past. अगर नाव को नंगर कर दिया चारों ओर से, and we are rowing and rowing and rowing, there is sweating, weight loss, fat loss, a lot of things happen, lot of things. जितना जितना होना का था सब कुछ हो गया, लेकिन नाव थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा, because we are so much attached with our glorious or traumatic past. बोले स्मृति के सिवा बांचूंगा कैसे स्वामी? अच्छा, एंड वी आर बिजी टू लैमेंट, ये व्यक्ति मुझे कभी समझा नहीं, तो कभी लैमेंट नहीं करते, लेकिन बात कर रहा है प्रेजेंट के बारे में, तुरंत बोल दिया वो व्यक्ति ऐसा था तो मुझे तो कभी समझा नहीं। मीन्स यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, जो मैं निंदा तो नहीं कर रहा हूं, और मेरा मकसद क्या है लोगों का निंदा करने का, कि मैं जिसका निंदा कर रहा हूं आप सब उनको घृणा करो, और देखो कितना मैंने सफर किया है। आई नीड योर इमोशन, सेंटिमेंट्स, रेस्पेक्ट, एवरीथिंग। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ अटेंशन सीकिंग। ये लोग गुरु का समालोचना करते हैं, बोले आप बहुत अटेंशन सीकर है, पता है? अरे उनका काम ही तो ऐसा है। इफ ही कांट seeks the attention for the student or the others, how the work will happen? और उनको करने का जरूरत नहीं होता है, ये होता है। बट हम लोग, other than his knowledge and love and everything else, apparently what looks negative, we start doing discrimination and discussion on it. But our, what is our end? बात तो हो गया, ऐसे करते करते क्या होता है, हमारा मन दुख में छाया जाता है। There is only one problem, that we
put another anchor. Come out from the past. जीवन में जो भी करो, your past will never come back. ये संभव नहीं. So why it is required to think? And we are too much worried about our future. क्या होगा? अरे क्या होगा क्या? You are losing your present. Love each and every moment, every person. Try to do. दृष्ट दुखेषु अनुद्विग्ने भा अनुद्वेगः. जो देख रहा हूं ठीक है, भगवान की इच्छा से ये हो रहा है. Who am I? हम लोग जीवन में हमारे इच्छा को इतना बड़ा कर देता है कि भगवान की इच्छा को हम लोग मान नहीं पाते. I desire this person will be like this. अरे क्यों? Each and every person is unique in their own way. भगवान की इच्छा से ये सब बना. जिन जिन का देख रहे हैं प्रकृति, सब भगवान ने ही तो बनाया. So ये भगवान की इच्छा है. Why can't I tolerate it? What is my problem? Dharma means, dharma jivan and spiritual life means to accept Bhagwan's icha. Yes, he is like that. बाघ नारायण है, ठीक है, लेकिन वो आलिंगन की वस्तु नहीं. So we keep a safe distance and accept that he is a tiger, and tiger is like that. It is his nature. बाघ क्यों ऐसा हो गया? जंगल में रहते हैं, जंगल में तो साधु लोग भी रहते हैं, तो साधु का इतना करीब रहते हुए भी बाघ क्यों ऐसा है? अरे बाघ ऐसा ही है. हम लोग विचार करने का कौन है? भगवान ने बनाया ऐसे, उनका लीला है. एक्सेप्ट इट. विद्यायाः प्रस्तुतम फलम. प्रस्तुतम फलम मीन्स अवश्यंभावी फल, indispensable result of Atmajnana, byproduct, natural byproduct. Bhranti belayam, in Ajnana avastha, yat nana jugupsitam karma kritam. अगर जब नाना जुगुप्सितम कर्म, which is condemned, शास्त्र ने जिनको माना किया है, शास्त्र ने जिनको माना किया है, मतलब मैं किसी का चोरी नहीं करूंगा, किसी को ऐसे नहीं करूंगा. सिर्फ ये नहीं, जुगुप्सितम कर्म मीन्स किसी का निंदा भी मत करो, क्योंकि शास्त्र ने इनका भी माना किया है. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. आप यू कांट से वंस मैंने सुना है आप इनका भी निंदा कर रहे हैं. हम लोग वी स्टार्ट टेलिंग टू आवर आचार्य. आचार्य हैज ए पर्पस टू टेल एवरीथिंग एल्स. ये शास्त्र की छाड़ है. आचार्य को भगवान देखेगा. वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज हिम. आप मुझे निंदा करने के लिए मना कर रहे हैं, आप भी तो इनका निंदा कर रहे हैं. डू यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट?
हम लोग किसी का निंदा करते हैं दूसरे को छोटा प्रतिपन्न करने के लिए, उनके हृदय में ज्यादा प्रेम पाने के लिए, और दूसरे के लिए घृणा पैदा करने के लिए। आचार्य के मन में ये नहीं रहता। देयर इज समथिंग बिगर पर्पस। यस। विवेकेन पश्चात नरः तत्कथम करहुति अर्हति। लेकिन जिनका विवेक हो गया है सच में, वो व्यक्ति कैसे ऐसे करेगा? प्लीज लिसन टू द डिस्कोर्स। नो नीड टू स्टडी और एनीथिंग एल्स। प्लीज लिसन टू द डिस्कोर्स। सो दृष्ट दुखेशु अनुद्वेगः। जो दुख सामने आ गया है उसके लिए हम लोग वी आर नॉट ओरिड। सेवा करना है कर दूंगा, जितना हो सके दूसरे से ज्यादा ही करूंगा, बट विदाउट उद्विग्नता, एंजाइटी। क्या होगा क्या होगा? फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान के हाथ में है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। सच में दुखजनक है, कोई तड़प रहा है, कोई मृत्यु यंत्रणा हो रहा है, किनका? आई विल डू एवरीथिंग एल्स, लेकिन मुझे बहुत खराब लग रहा है, ये कैसे? नो। our acharya parampara is telling your mind will be fixed in Bhagwan. My Bhagwan is expressing in this way. What is required? सेवा is required. उद्विग्न व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर पाते। अगर नर्स पेशेंट का अवस्था देखकर उद्विग्न हो जाए, कैन शी डू द प्रॉपर नर्सिंग? इज इट पॉसिबल? किसी का अपेंडिक्स का पेन हो रहा है, डॉक्टर रो रहा है, अरे भाई इतना पेन हो रहा है, डॉक्टर ऑपरेट कर पाएगा? इट इज हिज सेवा। यू सी इन दैट वे। ये कब हो सकता है? विद्यायाम विद्यायाः प्रस्तुत फलम। आत्मज्ञान की एकदम ताजा गरम गरम फ्रेश फल है। ये हम लोग उद्विग्न नहीं, वी आर नॉट एंग्जियस एट ऑल, वी आर नॉट ओरिड एट ऑल। समय के नियम से, काल के नियम से, कर्म फल के नियम से जो होगा सो होगा। जो मेरा होगा मेरा होगा, उनका होगा उनका होगा। बट आई लव टू डू, आई लव टू सर्व, आई लव टू लव। लोगों को प्रेम करने का नशा होना चाहिए, विदाउट एनी रीजन। वो मुझे ये देता है, वो मुझे बहुत सेवा करता है, मुझे ये करता है, दैट इज वाई आई लव हिम। ये मेरा बच्चा है, वो जितना भी गुनाह करे, आई लव हिम। नो। सबको प्रेम करो जिनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। प्रेम प्रेम प्रेम। आत्मज्ञान की फल इट्स लाइक दैट। संसार समुंदर में कितना तूफान, कितना लहर आता है, लेकिन ब्रह्म पल्लव, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। जब प्रलय हो गया तब क्या देखा? ये बहुत लहर तूफान हो रहा है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा मेरा क्या। तब क्या दिखाई दिया?
एक बट की पाता में भगवान सोए हुए हैं और अपने पैर की अंगुली मुंह में लगाकर चूस रहा है। आत्मज्ञान की फल। एम आई हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। अगर वेदांत क्लास में ही आपके मुंह में हंसी नहीं, मुंह में प्रशांति नहीं, हाउ यू कैन बिलीव that other than the class, you will be very happy, very jovial, and you will love people? You just think in that way. If in the class we are not happy, we can't smile. How it is possible apart from the class? विद्यायाः प्रस्तुतम फलम। प्रस्तुतम मतलब एकदम तैयार हुआ है फल। मम्मी बहुत भूख लगा है, बैठ जाओ, खाना तैयार है। सिर्फ तुम्हारा बैठने का अपेक्षा कर रहा है, ऐसे नहीं कि बनाना पड़ेगा। प्रस्तुतम फलम। ये एक प्रोसेस के माध्यम से आते हैं। अभ्यास करते 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 वैराग्य आते हैं। वैराग्य से ज्ञान होता है और उस ज्ञान की फल क्या? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवद गीता में 2nd चैप्टर। ये ज्ञान की फल है। उसके बाद बोल रहे हैं यत् कृतम भ्रांति बेलायाम नाना कर्म जुगुप्सितम। अज्ञान अवस्था में हम लोग बहुत गलती किया है, हो सकता है फालतू टाइम वेस्ट किया है, जिनमें अटेंशन देने का जरूरत नहीं उसमें दे दिया। जिस विषय में, जिस व्यक्ति में, जिस घटना में, जिस परिस्थिति को ज्यादा अटेंशन, ज्यादा प्रायोरिटी देने का जरूरत ही नहीं था। Out of my misconception, out of my false desire, I have done all those things. कल्पना की सुख पाने के लिए गलत व्यक्ति को चुना, गलत अवस्था को चुना, प्रायोरिटी दिया। लेकिन तब तो मेरा विचार बुद्धि परिणत नहीं हुआ था। एटलीस्ट शास्त्र जैसे बोल रहा है, क्योंकि इसमें शास्त्र के अधिकार है। यू हैव टू वॉक along with the shastra. You have to think in the path of shastra, in the light of shastra. So you can feel that I was not matured enough. Spiritual maturity was not there. That is why social maturity also not there. लोग बोलते you can be spiritually matured, but very matured in the social cases. क्यों? Because you are so much indifferent in all those. अरे वो मैच्योरिटी का ही फल है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में मैच्योर्ड होता है ना, जगत में मैच्योर्ड होने का जरूरत नहीं होता है उनका, क्योंकि जगत तो अनित्य ही है भाई। क्या मैच्योरिटी हो गई, क्या प्लान बन? नहीं, आई विल मेक ए प्लान, यू विल डू दिस थिंग्स इन दैट टाइम एंड यू विल टेल, यू विल कॉल दैट पर्सन फर्स्ट। और अच्छा करके बोलना, लेकिन ध्यान रखना ये बात थोड़ा सा भी मुंह से निकलना है, ये मैच्योरिटी है। स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन बोलेगा भाई जगत बाहर में जाए, ठीक है क्या हुआ, वो बोल दिया तो बोल दिया, क्या हुआ, उसके बाद बोलो। वो कर दिया तो कर दिया, परवाइल्ला, কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে, व्हाट नेक्स्ट।
That is the best form of maturity. Let it be, let it be, let it be. And then neti, 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 neti. This is the actual thing of maturity. ऐसे भी हम लोग बहुत व्यक्ति देखते हैं जो धीर स्थिर शांत प्रेमिक है. हम लोग उन लोगों से सीखता हूं. और ऐसा भी है हम लोग चोट खाकर सीखता हूं. लेकिन ऐसा भी व्यक्ति है जो मरते दम तक चोट खाते ही आ रहा है लेकिन सीख नहीं रहा है ना. ऐसा हम लोग बहुत कुछ कर लेता है और बाद में अफसोस करता. लेकिन पश्चात नरः विवेकेन तत्कथम कर्तुम अर्हति. जब ज्ञान होगा, जब विचार करने की बुद्धि पक्का होगा, तब लोगों से अन्याय नहीं होगा. न हन्यते हन्यमाने शरीर, है ना. ना तो खुद वध होता है ना दूसरे को करते. कोई ऐसे भाव ही नहीं रहता. विवेकेन मतलब मैं विचार विवेक अप्लाई करना सीख लिया. इसीलिए मेरा उपरति हुआ है. और मैं लगाम से इंद्रियों को खींच के रखा. तब भूल कैसे होगा. भगवान श्री राम कृष्ण बोल रहे हैं वेचाल में पा नहीं पड़ेगा. तार बेचाले पाप और बेना. ऐसा अभ्यास हो गया कि कोशिश करके भी अन्याय नहीं कर पाएगा. सत्य को जब आप अनुसरण करना चालू करेंगे तब सत्य आपको अनुसरण करना चालू करेगा. यही रीत है. दिस इज द ब्यूटी. और ऐसे अवस्था पाने के बाद ही हम लोग बोल सकता है कि मेरा स्पिरिचुअल कैरेक्टर हैज बीन मेड राइट नाउ. मेरा आध्यात्मिक चरित्र बन गया. When the final beatitude is experienced, man is unruffled by the painful experiences that he may have to live hereafter in the world. The pinpricks that he is conscious of at the physical, mental, intellectual levels, all the jars of life, subjective and objective, never disturb him. This is indeed the effect of the knowledge that has come to him as a result of sadhana. ये कॉन्शस रहना ही साधना है. साधना की कुछ दूसरा मकसद मत निकालिए. आई एम ऑलवेज अलर्ट. मैं शास्त्र विरोधी कुछ सोच तो नहीं रहा हूं. मैं शास्त्र विरोधी कुछ बोल तो नहीं रहा हूं. मैं दूसरे को दुखाया तो नहीं मेरा शब्द से, मेरा आचरण से, मेरा भावना से. हर वक्त आई एम अलर्ट. आई एम वेरीली अलर्ट. कुछ बोलने से पहले आई एम वेरीली अलर्ट. यही मेरा साधना है. यही मेरी बंदेगी, यही मेरी पूजा. फूल से पत्थर पूजते हैं हम. अगर पूजा को सफल करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी कॉन्शियस एट योर एवरी मोमेंट. इवन इन द टाइम ऑफ क्लास, that I am steady, really I am listening,
आई एम पोरिंग लव इनटू इट, और आई एम गेटिंग एनॉयड, अरे क्या बोल रहा है, हर रोज एक ही बोल रहा है। कभी कभी तो लगता है इसके साथ सब्जेक्ट का संबंध ही नहीं है। मैंने सोच लिया है कि उन्होंने ये बोलेगा। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट एवर ही इज टेलिंग। देयर मे बी सम पर्पस। हर वक्त हमारे इच्छा को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देता है कि ही शुड स्पीक इन दिस मैनर एंड दिस नो, accept the thing as it is. There must be some purpose. अपने बुद्धि से काम नहीं हुआ इतना दिन, ये पहले समझो। आज आया है आप शास्त्र की बुद्धि लेने के लिए, उनको स्वीकार कीजिए। अपना बुद्धि को, प्रायोरिटी को, घमंड को थोड़ा कम करो। Not only it is or he is unaffected by the sorrows of the body, mind, and intellect, but he no more pursues the disgusting and repulsive action that he may have performed when he was in a state of delusion, when he was a bundle of misconceptions about himself. Considering ourselves to be the body in order to bring more comforts to it, we stride out into the world of competition, and by means fair and foul, try to fulfill all our desires. We become slaves to our sense organs and their demands. How can a man who has regained his discriminative powers to the full continue with the vile deeds that he might have perpetrated during his days of confusion and misunderstanding? In a drunken mood, when the intellect is veiled by the fumes of drink, a drunk might behave and act in many a disgusting manner. When the effects of drink have worn off and the mind has emerged from the delusory fumes, then in the saner moments, how can the drunk of the night before repeat his mischief in the clear light of the morning after? पी के लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जब फ्रेश हुआ, एक ही गलती कैसे करेगा? क्योंकि जब विचार सभा होता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, और विचारक जब देखा कि ठीक है वो तो पिए हुए थे, लेकिन ही वॉज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, तो ऐसे हो गया। लेकिन वेन एवर यू आर फ्रेश इन द मॉर्निंग, हाउ इट कैन बी टॉलरेटेड? In the same way, drunk with the vasanas and passions of the body, the individual during his days of ignorance might have perpetrated many shameful acts of viciousness. He cannot continue them after realization because by then he has come to experience his spiritual unfoldment, and as a consequence has realized the demeaning grossness of his lower personality. Hari Om Tat Sat.